गाइस, तो अभी से हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं और मैं अभी व्लॉगिंग करने आया हूँ सरदार पाव भाजी की इधर। मेरे साथ है ब्लॉग विद अनिकेत। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके जरूर सब्सक्राइब करें। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हम मुंबई सेंटर के इधर है और इधर से हमको 10 मिनट लगेगा सरदार पाव भाजी के लिए जाने के लिए। हमको टेबल तक जाने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। तो दिखा फाइनली हम बहुत देर खड़े रहने के बाद हमको सीट मिल गई है। बहुत देर के बाद इंतजार करने के बाद हमको विजिट करना मत भूलना। और इधर की पाव भाजी 140 में और एक्स्ट्रा पाव 20 में मिलते हैं। मुंबई सेंटर से सरदार पाव भाजी के लिए जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। घाटकोपर पहुँचे और घाटकोपर किंग जूस आए। इधर की डेज बाय चॉकलेट बहुत फेमस है, वही खाने आए। फाइनली डेज बाय चॉकलेट आ गया है।